हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो यार ये चैनल की शुरुआत मैंने 1-2 साल पहले की थी, यूजली टू पोस्ट लाइक गेमिंग क्लिप्स एज अ हॉबी। अगर आप चैनल पे देखोगे, आई हैव अ लॉट ऑफ लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी क्लिप्स पोस्टेड। आई डू प्ले अदर गेम्स एज वेल, फीफा वगैरह खेलता हूँ, रॉकेट लीग, सिंगल प्लेयर गेम्स वगैरह। बट हाँ, उनके भी सोच रहा हूँ धीरे धीरे डालना शुरू करूँगा। टुडे आई गॉट अ बिट बोर्ड गाइस। मैं आया था बाहर से एंड आई वाज लाइक वीकेंड है, सैटरडे, कुछ डिफरेंट करते हैं आज। आई एम थिंकिंग कि हाँ, लेट मी ट्राई टू मेक अ लीड कोड प्लेलिस्ट. So yeah, hopefully this like helps even one or two people. That is probably what my goal is with this. um, and yeah, by profession मैं software engineer हूँ FAANG company में. I've been in the industry for about 3.5 years to 4 years होने वाले हैं. And yeah, for those of you who don't know, Leetcode website है where you can practice algorithmic programming style of questions, and they are usually asked in all ranges of software engineering interviews, from like new grad level to even senior software engineer levels. So it's good to have some sort of experience with these kind of questions if you're applying to like interview there. And yeah, if anyone wants to enter programming and learns to change professions, right, उनके लिए भी this is, I would say, pretty useful. And yeah, so we can like, मैं सोच रहा हूँ कि every weekend या every other weekend डालूँ इस type का video. And my goal with this is also to show you guys my side, right? Like, even though I'm an engineer at big tech, I might not be the best at lead code, right? The different type of skill set है जो practice के साथ ही आता है, I think. So yeah, you have to keep practicing to brush up those skills जो आपने colleges में पढ़े होंगे. And so yeah, I want to show like an unedited version, right, कि कैसा होता है and how I do this as well. I won't try to mimic like a proper like interviews kind of style, right? Agar log are interested, we can try to do that later. And yeah, you guys can see probably different categories here too, right? So you can see arrays, strings, tables, DP वगैरह, sorting, greedy algorithms, graph. But yeah, we can cover like, I'm thinking every weekend or every other weekend मैं डालूँ एक दो video. And yeah, then क्योंकि guys during the week also we code, right? So we don't wanna um, do this like even after on the weekend, right? One or two I think is good enough. And yeah, so that's the main goal with this. I'm thinking मैं Python यूज़ करूँगा क्योंकि मैं पहले इंटरव्यूज में भी Python यूज़ किया था, और जहाँ पे मैंने अंडरग्रेड किया यूएस में भी, like we had a pretty good Python course, so I'm pretty comfortable with the language. एंड आपने लोगों को भी सुना होगा ट्विटर वगैरह पे कि बोलते हैं कि अगर यू वांट टू डू प्रोग्रामिंग, पाइथन से शुरू करो. इट्स अ प्रीटी इजी लैंग्वेज टू पिक अप. आई डू अग्री. I think the main reason is you can do a very complex like algorithm operations like in a single line, which is why I think it's useful. And yeah, it's pretty easy to pick up. So learnability भी एक aspect है language का. Flexible language है, types वगैरह का चक्कर नहीं पड़ता, so you don't have to worry about that in the interviews. पर हाँ, let's start with this without any further ado, guys. एंड पहला वीडियो है, सो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू गाइस फाइंड यूजफुल, क्या कर सकते हो डिफरेंट. आई एम थिंकिंग कि एवरी अदर वीकेंड पोस्ट करूँ एक वीडियो. एंड या, सॉरी फॉर द लॉन्ग इंट्रो, पर पहला वीडियो है, सो आई थॉट कि लेट मी स्टार्ट विद दिस. एंड या, तो मैं वेबसाइट पे आया था, आई सॉ कि इनके पास भी अब डिफरेंट लिस्ट आ गई है. दिस प्रीटी नाइस. 975 की तरह Leetcode 75 आ गया है. Yeah, this looks pretty nice. Different kinds of problems here, so this might be like a quick way to like cover all different topics, right? So let's start with something simple, guys. Pehla video hai. Let's start with this reverse vowels of a string. This looks pretty easy and easy tag bhi hai. So yeah, Python language hai. Okay. So given a string S, reverse only all vowels in string and return it. The vowels are A, E, I, O, U, and they can appear in upper or lowercase. So this is the important part. More than once. So they can appear in upper and lowercase more than once. ठीक है. So we have a string दिया हुआ है, हमें reverse करने हैं vowels in the string. So I have a string, return the vowels, and it can be in upper or lowercase more than once. Okay. So off the bat, guys, मैं सोच रहा हूँ कि we don't have to talk about edge cases and stuff, guys. अगर वो interviews में usually good to talk about, but yeah, अगर यहाँ पे भी edge case हम solve कर सकते हैं. तो अगर empty string है, guys, so we can just return as this, right? Empty string के लिए we'll just return empty. कोई reverse करने की ज़रूरत है नहीं. और अगर string की length भी एक ही है ना, एक
कैरेक्टर का स्ट्रिंग है देन ऑल्सो वी कैन रिटर्न. पर हाँ अगर 2 कैरेक्टर का स्ट्रिंग है देन वी हैव टू चेक. सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आई एम थिंकिंग हमें रिवर्स करने हैं ओनली वॉवल्स. सो वी कैन स्टार्ट विद द बिगनिंग एंड एंडिंग दिस थिंग इंडेक्स एंड वाइल दे डोंट ओवरलैप ईच अदर राइट. सो मैं एच से शुरू करूँगा और ओ से शुरू करूँगा एंड देन आई विल ट्राई टू इटरेट. और अगर डिफरेंट वावल है देन वी कैन स्वैप and only if it's a vowel they will swap. And guys, because this is also uppercase or lowercase, it's better to I think make the string fully lowercase, right? So इसको ऐसे दो लोअर कर देता हूँ स्ट्रिंग को पहले लोअर केस. सो इट्स इजी फॉर अस टू कंपेयर जब हम आगे से पीछे जा रहे हैं और पीछे से आगे जा रहे हैं. सो यार दिस इज माई बिगनिंग इंडेक्स. फिर है मेरा एंडिंग इंडेक्स. शुरू करते हैं. सो वाइल आई इज लेस देन जे कंपेयर करना है. सो एस ऑफ आई रिवर्स ओनली द वॉवल्स. ओके सो मैं वॉवल्स का भी एक सेट बना सकता हूँ. पता नहीं कोई अगर वॉवल का कोई फंक्शन है कि नहीं. सो आई मेक अ वॉवल सेट राइट. वॉवल सेट. तो सेट को मैं इनिशियलाइजेशन भूल गया एक्चुअली कैसे करते हैं. आई थिंक ऐसे करते हैं पाइथन में. सो ए ई आई ओ यू. तो ये सेट हो गया हमारा. सो मैं बोलता हूँ एस एन आई इन ए एंड एस ऑफ जे इन ए इन वॉवल सेट. तो आप गाइस देख सकते हो कि मैं कितना रस्टी हूँ क्योंकि मैं इतने देर के बाद कर रहा हूँ. तो हाँ अब हमारा आइडिया है कि हम आगे से पीछे जाएंगे पीछे से आगे जाएंगे. एंड सो या इफ़ एस ऑफ आई अगर बिगनिंग भी वावल है एंडिंग भी वावल है देन वी हैव टू स्वैप. सो वी कैन डू एस ऑफ आई. पाइथन में आई थिंक यू कैन डू दिस इन वन लाइन. सो एस ऑफ आई एस ऑफ जे is equal to s of j s of i. So I'll go from front till back. और ये मेरा ज़ीरो की जगह मैंने वो लिखा है. मैंने जब भी नोटिस किया. अच्छा ज़ीरो ऐसे ही है ठीक है. सो आई मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है. जे मेरा एंडिंग इंडेक्स है. सेट बना लिया है वॉवल्स का. आई गो फ्रॉम आई स्टार्ट इटरेटिंग एंड while i is less than j I swap them if they are this thing. And I usually go I will sort of keep moving the forward index there and the last index backwards. So this condition will return false at some time, and after that time I can return s. So a simple case guys we can try to solve. तो अगर है हमारा है a e right. So हमारा I will be 0, j will be 1, I is less than 1, a भी वॉल में j भी वॉल में will e a हो जाएगा. I will become 1, j will become 0, condition false, return s. So I think this should work. इसकी रन टाइम कम्प्लेक्सिटी जैसे o of n है, सेट है कॉन्स्टेंट लुकअप के लिए. So I think this should work. इसको रन करते हैं पहले देखते हैं. रन टाइम एरर. हाँ वही मैं सोच रहा था. मैंने देखो ना ज़ीरो की जगह मैं ओ डाल रहा हूँ कोडिंग करके. ओके अच्छा. Does not support item assignment. Oh guys ये string है. मैं भूल गया पाइथन में strings are immutable. ये तो मैं भूल ही गया. ये तो मेरे को अभी याद आ रहा है. Immutable है मतलब है you can't change the elements of a string in Python because the string is immutable. So what I can do here is convert this to a list and then I can return the list as this thing. So what I can do is list string list is equal to list of s. तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ. while I is less than j if str list of I in vowel set and str list of j in vowel set. इसको भी str list कर लो. Then with list is mutable. So list में I should be able to do this I think. और मैं सोच रहा हूँ गाइस कि मैं जब लिस्ट आ जाएगी
तो लिस्ट में vowels सब उल्टे हुए होंगे. Like I would have reversed swap the vowels, right, when I have to in this list. And then I can Python में, this is the beauty of Python, you can join all elements of the list and turn it as a string. So I can join them with nothing. So I think मेरा syntax थोड़ा गलत है. I think syntax ये भी हो सकता है, join. Yeah, I think syntax ये है. हाँ, so let's try this. Wrong answer. क्या है भाई wrong answer? देखे. So H आई थिंक मेरी सेट की डेफिनेशन भी गलत हो सकती है. आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सही थी. सो लेट मी डू वॉवल. एक्चुअली वॉवल लिस्ट बना देता हूँ. वॉवल लिस्ट ए ई आई ओ यू. इसको सेट बोल देता हूँ अभी. सो लग रहा है कि आर रिवर्स ओनली ऑल द वाउल्स इन द स्ट्रिंग एंड रिटर्न इट. Wait, I think I might be doing something wrong. Case 1 works fine, but case 2 works fine. Case 1 में गलत हो रहा है. Let's see what's happening. So हमारा hello है, आउटपुट हमारा hello ही आ रहा है. 5 है होली. Oh, I see. Guys, this is interesting. तो ये मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा. Guys, this is a problem, or this is a good example actually to show. हमारा hello है, but we have to reverse only the vowels. what I was doing कि मैं आगे पीछे जा रहा था, even though if like H and O don't match, right? तो मैं H को E में इसका काउंट को E पे ला रहा था, O के L पे ला रहा था, because I thought कि same position पे आगे पीछे से it has to be swapped, but you only have to swap if they're vowels. So that makes more sense. So what we can do is we have to check separately. हम पहले एक check कर रहे थे. So if str list of I in vowel set, so इसको कर देते हैं नॉट इन वॉल सेट, राइट. पहले चेक करते हैं कि अगर नॉट इन वॉल सेट है, नॉट इन वॉल सेट है तो हम इसको आगे कर लेंगे. सिमिलरली इसको करना है जे के लिए. इफ एस टी आर लिस्ट ऑफ जे नॉट इन वॉल सेट, तो जे माइनस इक्वल टू 1. इसको फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं. और अगर ये दोनों पास हुए, so they should be in wall set, then we can just do this. एक्चुअली सिर्फ मेरे को समझ नहीं आ रहा. सो वॉल सेट नहीं है, एच पे नहीं है, तो हम ई पे लाए, ओ पे है. ओके, लेट्स ट्राई रनिंग दिस. Okay, so that works. तो guys, we basically have to like only swap vowels. तो हमें check करना है कि we arrive at a vowel, and once we do arrive at a vowel, then we swap. So that's basically the rule, guys, which is pretty interesting. Yeah, so let me submit this and देखते हैं कि कितना हो रहा है. Oh, wrong answer, 37 or 40. Oh, I see. So we have to even maintain the casing, guys. We have to maintain the casing, तो ये भी नहीं कर सकते. So इसको भी मैं usually I can handle these cases separately.
एज वेल, पर मैं अभी उसके बचाने के लिए इधर ही कर रहा हूँ. पर यूजली आप अपर केस लोअर केस इधर भी देख सकते हो अगर करना है. लेटर. तो गैस हो गया, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है. इट टुक अस अ बिट ऑफ अ टाइम, राइट, बट एक्सेप्ट हो गया सोल्यूशन. इट्स प्रॉब्ली नॉट द क्लीनेस्ट सोल्यूशन. आई थिंक ये कोड आप पूरा क्लीन कर सकते हो. और इधर भी मैंने हार्ड कोड किए हुए हैं, लाइक upper lower case, which I can just like check in here maybe. But yeah, idea था कि आगे से पीछे जाओ and you only reverse the vowels. So yeah, thanks for watching guys. Hopefully आपको this probably give you guys a good idea, right? I'm a bit rusty, I haven't done this for a while, and even my code is not the most optimized, right? So yeah, even though I work at Big Tech, like you might not be very good at Leetcode. So that's the idea. Hopefully you guys like this, and let me know how I can make this different, or कोई different type का video देखना है. I'll try to do this like every weekend, every other weekend, so we can try to cover different types of questions, different categories. Playlist भी बना सकते हैं बाद में, and we can cover other topics too, right? Maybe अपने practice के लिए भी कर रहा हूँ, and to help people. And yeah, I'll see you guys in the next one. Thanks for watching. Bye.